એમ નાળિયેર ધોળો અને મીઠો, એમાં આત્મા અંદર શુદ્ધ, ધોળો એટલે શુદ્ધ, ચૈતન શુદ્ધ અને મીઠો એટલે આનंद। ये आनंद कंद प्रभु आत्मा है। उसकी दृष्टि कर, एनी दृष्टि होय तो एने सिंगल दृष्टि कहने में आता है। नहीं तो राग ने पुण्य ने अपना मानना, पोता ने मानना, ये मीठा दृष्टि। एने सत्य वस्तु ની ખબર તો એ કહેते हैं કોઈ પણ કાળે જે વસ્તુ પોતાથી રાગ ને દ્વેષ ને વિકાર રૂપે પરણતો નથી, ये तो शुद्ध चैतन है। In the early part of 20th century, there were two very important and very prominent leaders that emerged from the state of Gujarat. One is Mahatma Gandhi ji. He was the political leader who spread the message of ahimsa, God, and political freedom to the people of India. Second was Pujya Gurudev Sri Kanji Swami. He was a spiritual leader who propagated the philosophy of soul and inspired people to achieve spiritual freedom. વિક્રમ સંમત 1970માં એમણે ઉમરાળામાં દીક્ષા લીધી. તો એ સ્થાનકવાસીના શ્વેતાંબરના શાસ્ત્રો વાંચતા હતા, સેટિસ્ફાઈડ નહોતું એમને, અને અંતે એમને 32 વર્ષની ઉંમરે, આજથી 100 વર્ષ પહેલાં સમયસર આત્મા આવ્યો. એમના જે કાંઈ ક્વેશ્ચન્સ હતા, ઇન્ક્વિઝિટ, જે એનું બધું એમાં આન્સર મળ્યું. समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कांजी स्वामी एक ऐसे व्यक्तित्व हुए इस जैन परंपरा में जिन्होंने समय सार हाथ में आने के बाद, मोक्ष मार्ग प्रकाशक हाथ में आने के बाद में अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। तदोणियतिम कुणदी जीवो, उन्हें खोज थी, उन्हें तलाश थी कि क्या है रियल जैनिज्म, मैं कौन हूँ, ये शुद्ध आत्मा कौन है। आत्म करेन से निवर्तन दुख कारण मान कर। शास्त्रों के ज्ञाता थे
और फिर दिगंबर शास्त्रों का वांचन, समय सार, गौमर सार वगैरह की अध्याय करते करते इनको वहाँ बड़ी बहुत रुचि हो गई। इसीलिए उन्होंने वो समय सार वगैरह शास्त्रों के ऊपर प्रवचन शुरू किया कई साल पहले। पूज्यपाद कांजी स्वामी थानकवासी ही थे परंपरा में। उनके पश्चात ये थानकवासी का ये रजोहरण मुहपति दोनों का त्याग किया। उन्होंने सोनगढ़ में दिगंबर परंपरा का एक वहाँ हेडक्वार्टर बनाया दिगंबर परंपरा का। लेकिन ये जो परंपरा है न, वो पूरे हिंदुस्तान में जो दिगंबर संप्रदाय है, इससे कोई इनका सरोकार नहीं है। फिलहाल ये पूरा मिशन ग्रस्तों के हाथ में है। देखिए, त्यागियों के हाथ में नहीं है, श्रावकों के हाथ में है। પછી પરિવર્તન કર્યું એટલે ડ્રેસ કન્ટિન્યુ રાખ્યો અને પહેલાંનું જે સંયમમય જીવન બાહ્યનું હતું એ રાખ્યું, પણ ક્યારેય પણ એમણે પોતાને મુનિ નહોતા માન્યા અને એમના જે ભક્તો છે એ પણ એમને ક્યારેય મુનિપણું નથી માન્યા. કારણ કે વિતરાગ દિગંબર ધર્મની અંદર મુનિપણામાં તો વસ્ત્ર પણ ન હોય, પાત્ર પણ ન હોય, એમને કોઈ ઉપાશ્રયમાં રહેવું એવું પણ નથી હોતું. जिनकी आप बात कर रहे हैं वो समय सार पढ़ते हैं, पर समय सार पढ़ने वाला वस्त्र पहन के घूमे क्या? तो वो खाली समय सार को पढ़ रहा है, उसमें अनुभव कुछ नहीं है। जिस दिन अनुभव होगा वो वस्त्रों में नहीं रहेगा, निर्वस्त्र हो जाएगा। रवि भाई थोड़ा सीटिंग में हो रहा, आप थोड़ा साइड जाओ। यहाँ जाओ, अब यहाँ जाओ। नहीं, ये पूरा साइड दिखना चाहिए, आप वो साइड दो, ये पूरा साइड खाली रखो। आगे जाओ। क्या कि उसने आत्मा के सार को नहीं समझा, आत्मा को नहीं समझा, खाली आत्मा आत्मा। अब ये आपने देखें, मीठा 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 कहने से अपना मुंह मीठा नहीं होगा, मीठा खाना पड़ेगा मुंह मीठा करने के लिए। क्या एक जने ग्रास देवे को बैठ जाए, एक ग्रास देके बैठ जाओ, बाकी कपड़ा थोड़े कौन टूटी जाए। हाँ कपड़ा तो जड़ है, नीचे उतारना ये आत्मा की क्रिया नहीं, आत्मा कर सकते नहीं। जीणी बात भाई, वितराग मार्ग त्यारे बहु इनका हमें निराकरण करना चाहिए। समाज में से ये भ्रांति निकले। जो बात वो नहीं मानते हैं वो तो समाज जाने तो ठीक है, वो तो तत्व प्रचार है, लेकिन जो वो मानते ही नहीं हैं और उल्टी सीधी बातें उनके विरुद्ध कही जाती हैं, तो हमने कहा इसमें हमको उनसे इंटरव्यू लेकर के छापना चाहिए। की जानकारी के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपके माध्यम से समाज में बहुत तत्व का प्रचार हुआ है,
लेकिन कुछ लोगों ने कुछ भ्रम फैला रखे हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप यदि उत्तर दें तो समाज का बहुत कल्याण होगा। आपको लोग गुरुदेव कहते हैं, तो क्या आप साधु हैं? गुरु साधु नहीं, हम तो अमीर की संपत्ति है। साधु हम कभी जिंदगी भी नहीं, साधु हमारा। आपने गुणवाणी को घर घर तक पहुंचा दिया है। यद्यपि सारा समाज आपके इस उपकार को मानता है, तथा कुछ लोग कहते हैं कि आपने शास्त्रों में कुछ फेरफार कर दिया है। क्या यह सच है? बिल्कुल के है नहीं, ऐसा ही है, बिल्कुल से भर गए। तो उसका स्पष्टीकरण क्या है? हाँ, स्पष्टीकरण क्या है? हाँ, आपके संगठनों में स्पष्टीकरण तो बहुत है, बहुत है। तुम्हें पता नहीं है ये समय सार क्या चीज है, ये मुझे पता लग गया है कि ये समय सार क्या है। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने शास्त्रों को हाथ में लेकर के पढ़ना सिखाया हमारे को। उन्होंने कहा कि तुम खुद ग्रंथ लेकर के बैठो, तुम खोल करके देखो। पहले के समय में भी लगभग 300 वर्षों से शास्त्र परंपरा चल रही है यहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सिर्फ और सिर्फ सुनते थे, पढ़ते नहीं थे। कांजी स्वामी ने ये कहा कि आप प्रवचन सिर्फ सुनेंगे नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आप अपनी पुस्तक लेकर के बैठिए, अपना ग्रंथ लेकर के बैठिए। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सामने लिखा है या नहीं, आप देखिए उसे, आप खुद फील कीजिए इस जैन तत्व ज्ञान को। पूरे समय सार के कलश जो अमृत चंद्र आचार्य देव ने संस्कृत भाषा में लिखे, ये पूरे समय सार कलश, इसमें 278 कलश हैं। सब कोई 2 लाइन का है, कोई 4 लाइन का है, इस तरह से बड़े कलश। और ये 10 फीट तक खुल जाएगा पूरा। भी अपन इतना बड़ा तो इसको खोल नहीं सकते हैं, लेकिन 10 फीट का है ये पूरा। ऑन क्लोथ पर है। तो अपने आप में इतना बड़ा कपड़ा और इस कपड़े के ऊपर लिखना, ये अपने आप में एक दुर्लभ चीज़ है जो यहाँ इस जैन मंदिर की है। दिस इज 23 नंबर कलश। आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगथ विलसंतम स्वम समालोक्य येन त्यजसी झगिति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और टोडरमल जी में बहुत गहरा कनेक्शन है। टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने उनको एक बेस दिया, उन्हें एक पावर दी। टोडरमल जी ने सबसे पहले हिंदी गद्य को लिखा, उसके माध्यम से गुरुदेव श्री ने उन सब बातों को समझा। The followers of Purjya Gurudev Sri Kanji Swami are called Mumukshu. The word Mumukshu means the one who wishes for moksha. And moksha means salvation of soul. It means purifying your inner impurities and becoming a pure soul or Shuddhatma. Because the body is the closest thing we have to the soul, we think it's us. I think I'm Drashti because this body is mine, but that actually not what it is. You don't need to do anything else. It's just the pure realization that body and soul are different. If you attain that, that is Jainism. And down and rest. Rest for a bit. Keep breathing. Physiotherapist by itself means physical health of a person. It involves me actually treating a person's body only. So that's ironic. And it's difficult for me because every single day I want to give 100% true advice to a patient regarding their own body. But at the back of the mind I know, okay, body is just what we've attained right now, it's not really me.
ॐ ह्रीं श्री सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिन् अत्र तिष्ठठ इति स्थापनम् ॐ ह्रीं श्री सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिन् अत्र मम सन्निहतो भव भव षट्सन्निधिकरं पुष्पांजलिं क्षिपे जो जो। गुरुदेव श्री एक वाक्य बोलते हैं, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर। मतलब मैं खुद एक भगवान हूँ। वो आपको बात कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। सब आपको बोलेंगे कि आप आत्मा हो, पर आपको कोई भगवान आत्मा नहीं बोलेगा कि आप आत्मा, ऐसी आत्मा हो कि स्वभाव से आप भगवान के समान हो। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपतये सिद्ध परमेष्ठिने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलमेव पामेति स्वाहा। ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा वैसे तो बोलते हैं है ना, शादी नहीं करना, इसको बोल है ना, लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा है, पर ऐसा नहीं है। जब तक स्वभाव की कोई खबर नहीं हो, आत्मा की किसी को भान नहीं हो, तो उसके बिना ब्रह्मचर्य नहीं होता है। गुरुदेव की सबसे बड़ा, सबसे अच्छा वचन है कि तू परमात्मा है ऐसा नक्की कर, तू परमात्मा है ऐसा निर्णय कर, और तू परमात्मा है ऐसा अनुभव कर। बस इतने में गुरुदेव का सारा सार आ जाता है। और एक वाक्य और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो त्रिकाल सत्ता है, अपना स्वभाव है, उसमें कभी भी कुछ नहीं होता। પુણ્ય બાકી હતા, આ જિજ્ઞાસુ હૃદયો હતા તલસતા વસ્તુને ભેટવા. જયસેનાથરે દેવને ગાથા ઉપર એના પ્રવચનો આપ્યા છે કે તું જ જ્ઞાનરૂપ છે, તું જ જ્ઞેયરૂપ છે, તું જ જ્ઞાતા છે. ત્રણેય તારામાં છે. જ્ઞેય પણ તું, જ્ઞાન પણ તું અને જ્ઞાતા પણ તું. બીજા કોઈ ભી તારામાં નથી. પર સાથે તમારો કોઈ સંબંધ નથી. સંબંધથી દુઃખી છે. वो तो छे तो खर। गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। श्री जिनवर की भक्ति से जानो निज परचार। Between me as a transmigratory soul and the omniscient Lord or liberated soul called Siddha, there is no difference from the structure wise. He is a soul with complete purity. I am the soul with a present impurity. For example, in a blink of an eye, innumerable samay pass by. Innumerable means 10 to the power of 46 and beyond. So now you can imagine how small that samay is. And at that one samay, I have an impurity, and in one samay, purity. So between me and him, only difference is one samay, one samay, one samay. If I can purify myself, then I am the Lord. It's a religion with like no God, no creator that like rules over you. You are like the top of the food chain in your own food chain of one, you know? There's nothing above you, nothing below you. You're just you. In Jainism, that's literal. Like if you just
if you put your mind to the fact that you are the soul and like you don't need to have any attachments on this world, bam, you're there. It's done. It's easy as that. क्योंकि अन्य से अपन ने सुना कि इंद्रियां कितनी होती हैं, तो ये कहेगा 5 होती है। यही बोला जाएगा आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं। लेकिन कान्जी स्वामी ने एक दुनिया में एक क्रांति पैदा की कि आंखें नहीं देखती हैं, कान नहीं सुनते हैं, देखने वाला आत्मा है, सुनने वाला, जानने वाला आत्मा है। हर एक आत्मा ईश्वर है। यानी गुरुदेव ने सबको भगवान आत्मा, उनकी बात ही यहीं से प्रारंभ होती थी कि भगवान आत्मा। ये भी आता है आत्मा का अनुभव प्राप्त करने की विधि क्या है? विधि है आत्मा का सब झुक न हो, आत्मा आनंद कंठ है, उसकी आश्रय करना, सन्मुख होना, वर्ष विमुख होना, वो विधि है। तो आत्मा तो प्रकाश शुद्ध है, शुद्ध करने के प्रसाद की आवश्यकता शुद्ध है। प्रतीक में क्या है? तो है पर प्रतीक में आवे तो भी शुद्ध उसको छोड़ो ना, उसको शुद्ध कब हुआ? स्वना कारणे ही सम्यक दर्शन आदि થાય આશ્રય કારણે છે કે વસ્તુ પાસે ગઈ। નમો હરિહંતારમ નમો સીતારમ નમો હરિહરમ નમો વજાયારમ નમો લોય સભસાઉરમ એસો પંચનમોકારો સર્વ પાપ પ્રણાસનો મંગલાયં ચ સપ્રેસી પરમં ભવૈમં નમો। So it's almost impossible to put in words, but one can experience it. The realization is of soul because it's property of the soul. Soul knows and realizes. So that's why they say even a dog or a cat can get the what we call Samyak Darshan. Samyak Darshan is nothing but my true realization. And because my true realization is from within myself, a dog, a cat, a lion can get the Samyak Darshan because they too can realize themselves. So they can get it. Before Mom and Dad had really gotten into the Kanji Swami strain of thinking, we learned, I think, in maybe more of a standard way around some of the main, like ahimsa and anikantva and aparigraha, some of the main principles that you would find in any Jain community. Those were the conversations that we were having. When Mom turned from studying very multiple different aspects of Jainism from multiple different people and multiple different texts to really focusing in on Kanji Swami, that shift was actually one that was harder for me to accept. So a very powerful experience for me in understanding the principles of Kanji Swami's teachings was when my mom wrote her 2 books of poetry. And I do feel like it's an important way for me to understand Jainism, and it's a different way to understand Jainism. As I'm reading the Samay Sar, these are the thoughts just running through all around me. It says, I'm running from the past, I'm running to the future. I'm running. Guru tells me, you will get tired running to and from. Stay in the present, calm and collected. But what is that present? Is this my body which is running? My breath which I can feel? It is mind which keeps thinking? Is it my sweat? I'm running. Is the bird singing or no birds at all? Guru says, all this but more. Experience your free spirit, soul.
It is also there. Experience yourself, the knower, who knows the experiences, the past, present, and the future. That is what you are forever. I'm running. The most frequent question on Google is, what is the meaning of life? To me, I want to be happy. Happiness should be the prime objective of life, not your education or not your occupation. Life to me is the path from your unhappiness or from your worldly beingness to path of purification, becoming happy, becoming pure soul. સિદ્ધ ભગવાનને પણ અનંત ચતુષ્ટય છે, બરાબર? તો બેમાં શું ફરક? જો ફરક ખાલી એમાં યોગ અને બાકીના જે અઘાતી કર્મના નિમિત્તે જે પ્રતિજીવી ગુણોમાં અશુદ્ધતા છે. And to be happy, the natural path to me is the religion. That's where I learn religion, I teach religion, I practice religion, I also think about religion all the time. सम्यक प्रकृति ने सम्यक मिथ्यात्वનો ઉદય આવે છે, બંધાતા નથી. There are various centers which are running all over the place. For example, Songad, Todarmal Smarak in Jaipur, Manglayatan, Chaitanya Dham, Shashwat Dham, and there are many others. These we can think of as a churning machine which churns out Shastris or Vidwans. These experts are now going around the world and teaching the philosophy of Jainism to everybody. So it is like exponentially growing movement of Pujya Gurudev Shri Kanji Swami's teachings. आत्मनि रागादीन कुर्वाणः, आत्मा में रागादि करते हुए. मैं मेरे दोस्तों को देखता था तो वो कोई मैथ्स पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई कॉमर्स में है, लेकिन कोई खुश नहीं था. They were not bothering about their soul. तो the main motive of this institution is to talk about a soul. और फिर बाकी सारी बातें तो होती रहती हैं. राग होने की बात नहीं है, आत्मनि रागादि पूर्वाणः, करता हुआ, वे कर नहीं रहे हैं. तो गुरुदेव श्री से सीखने जैसी बात तो बिल्कुल यही है. और या ये कहें कि गुरुदेव श्री ने हमें कैसे प्रेरित किया. गुरुदेव श्री ने डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल को तो प्रेरित किया ही, उसके बाद डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल ने इतने सारे शास्त्री यहाँ पर बनाए, उन सभी को पढ़ाया, तो उसमें से एक मैं भी हूँ. न काय वांग मनः कर्म, मन वचन काया की क्रिया. मन वचन काय है, अब क्रिया माने ये हमारी क्रिया ही नहीं लेना. लकड़ी मरवाना रोता है सबका. शुभ भाव पर संसार है प्रभु. ये दयादान व्रत भक्ति पूजा का विकल्प है, राग है, दुख है, वो पर्याय में आता है. बताया संवर्णिता होती है भी बताया. उसमें से एक ही लात्रिका है प्रभु. भूतार्थ में से जाने हुए उसका नाम सन्नक दर्शन है. ऐसा कुछ है नहीं कि सिर्फ बॉयज़ के लिए ही धार्मिक एजुकेशन है, गर्ल्स भी इसको गर्ल्स करती हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो वी विल बी टीचिंग आवर पेरेंट्स ऑल्सो. हम अपने पेरेंट्स को सिखाएंगे, वी विल बी टीचिंग आवर चिल्ड्रंस ऑल्सो. सो वी विल बी टीचिंग 3 जनरेशंस.
There is definitely a relationship between the content of our songs and the teachings of Kanji Swami. After the revolution he created in the community, the creations which were composed after him, they include a content which is directly related to his teachings. सम्यक पादि गुणों से संयुत तिने ध्यान धर कर्म वमु जिनवर की भक्ति से होते विघ्न समूह अंत जानो. For example, when we sing or when we do bhakti, we also start appreciating those characteristics of God from the core of our heart. And then, which is the real bhakti according to Samay Sar, is that we develop those characteristics in ourselves and become equivalent to God. चिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया. गुरुदेव उनसे एक प्रश्न ये भी करते थे लोग कि भाई आप पुण्य को हे कहते हैं, तो पूजा पाठ भक्ति भगवान की तो सब पुण्य कार्य हैं, तो क्या ये नहीं करना चाहिए? और आपके भगत तो ये पूजा पाठ नहीं करते होंगे, लेकिन हम तो देखते हैं कि पूजा पाठ करते हैं आपके भगत भी, तो उसको पूजा पाठ करते भी हैं और उसे हे भी कहते हैं. ये दोनों बातें कैसी हैं? उन्होंने कहा देखो, गृहस्थ अवस्था में पूजा पाठ करने का भाव आए बिना रहता नहीं है, आता ही है, लेकिन जो भाव हम आता है वो करते हैं तो वो सब उपादेय थोड़ी हो जाता. वो ये सब है, भगवान की भक्ति का भाव भी आता है और उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, लौकिक अनुकूलता मिलेगी, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति की दृष्टि से वो है ही है, इसलिए हम है ही कहते हैं. उसकी पर्याय अवस्था क्रमबद्ध क्रम नियम, जो समय जो पर्याय होगी, पीछे जो होने वाली होगी, पीछे होने वाली होगी, ऐसे क्रम सर होती है. आगे पीछे करने की ताकत इंद्र ने नरेंद्र भी की नहीं. 308 से 311वीं गाथा तक
इस गाथाओं में तो बिल्कुल सीधी बात है कि एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, प्रत्येक देव स्वयं का करता है, उसको भी आगे पीछे वो नहीं कर सकता है, यही बात लिखी है। क्रमबद्ध पर्याय मतलब होता क्या है? बहुत इजी लैंग्वेज में यदि मैं आपको समझाऊं तो क्रमबद्ध पर्याय में 3 शब्द हैं। फर्स्ट वन इज क्रम, सेकंड वन इज बद्ध एंड द थर्ड वन इज पर्याय। क्रम इट मीन्स क्रम से इन ऑर्डर, बद्ध इट मीन्स दे आर ऑल बंच्ड अप, बंधे हुए हैं, एंड पर्याय इट्स द मॉडिफिकेशन। तो इसका सामान्य अर्थ बिल्कुल सीधा सा अर्थ होता है कि सारी पर्यायें क्रम से सेट हैं। ये पर्याय इसी समय में होनी थी तो हुई, और ये पर्याय इसी समय में होनी थी तो हुई। Hypothetically, we take the soul into the lab and dissect that soul. For example, you will just see that soul is made up of substance. That substance has infinite attributes within, and this attribute keeps on transforming, and this transformation is called modification, or a short form is called modes, and a Sanskrit word is paryay. This paryay comes on and on and on forever and ever and ever in a given soul substance. सिर्फ कर्मबद्ध पर्याय वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा की दृष्टि से है। देखिए, केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाने के बाद कर्मबद्ध पर्याय का व्याख्या हो सकती है। सदमस्त आत्मा वो सीधे ही कर्मबद्ध पर्याय में चला जाएगा तो भटक जाएगा, वो रास्ता सही नहीं है। कर्मबद्ध पर्याय है, अलबत्ता है, लेकिन सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा के ज्ञान के हिसाब से है, हमारे हिसाब से नहीं। કેવડી ભગવાને જોયું એટલે ભવિષ્યમાં પદાર્થનું પરિણમન થાય છે કે પદાર્થોનું પરિણમન ક્રમશર થાય છે એટલે કેવડીએ એ જાણ્યું છે। કેવળ જ્ઞાનને આધારિત કોઈ પદાર્થનું પરિણમન નથી, એ ક્રમશર થવું એ દરેક પદાર્થની પર્યાયનો સ્વભાવ છે। આવું જો પદાર્થનું ભવિષ્યની પર્યાયનું ક્રમશર પરિણમન ન હોત તો કેવડીનું ભવિષ્યનું જ્ઞાન જ ખોટું ઠરશે। અને પુરુષાર્થ ક્રમબદ્ધ પર્યાયનો નિષેધક નથી, પુરુષાર્થ પ્રમાદનો નિષેધક છે। जो कांजी स्वामी ने बताया है उसको कोई दिगंबर संत बताता नहीं है आज। यदि वो बताए और उससे सहमत हुए तो हम उसको भी समर्पित हो सकते। क्यों? लेकिन उनका मत मिलता नहीं, एक क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानते वो। हमारी किताबें हमने सब उन संतों के पास भेजी और सब ने उनकी प्रशंसा लिख के हमें भेजी। क्या? हमारी व्यक्तिगत भी और उन पुस्तकों की प्रतिपादन की भी हैं, लेकिन वो सिद्धांत को नहीं मानते पूरे। इसलिए हमारी श्रद्धा अभी हम नहीं कह सकते कि एक में किसी में है, लेकिन बैर विरोध हमारा किसी से नहीं है, सबसे मिलना जुलना सहज भाव से है। So everything is already decided, everything is fixed,
Every moment things are changing. That change is also fixed, and your pure soul, which stays constant, is also fixed. So Krambat Paryay actually teaches us that if things are changing and things are going to change in a particular way which is fixed, you cannot really do anything about it. So there's no point being sad, happy, or be angry. તેમજ જીવ સ્વભાવ રે શ્રીજી નવીરે રે ધર્મ પ્રકાશીઓ શ્રીજી નવીરે રે ધર્મ પ્રકાશીઓ પ્રબળ કષાય ભાવ રે જેમ સ્ફટિક મણિમાં લાલને પીળી ઝાંકી દેખાય છે તે સ્ફટિક મણિમાં ઉપાધિ છે એ સ્ફટિક મણિનું સ્વરૂપ નથી એમ ભગવાન આત્મા દેહમાંથી બિન ચૈતન્ય મૂર્તિ બિરાજે છે તે પોતે શુદ્ધ ને પવિત્ર છે. He gave an example of a crystal statue. So if you flash a light, say a red light on the crystal looks red. If you switch off the red light, the crystal comes back to its original thing. So actually it's not the crystal which is changed, it's the things around the crystals which are reflecting on the crystal which is giving them the color. So same thing what happens with us. So the circumstances around us, the feelings what we get is actually not us, it's just the reflection of what is happening around you. So you can tell me the page number and I can follow it. So the page number is 26 and it's 20. lesson 20. Okay. Talking about the art of dying. So we have a friend, she had a miscarriage. Like there was a fetus and then there wasn't a fetus. Yeah, so now you can think that the baby which was going to be in her womb is also independent and I'm independent. There was nothing, I had nothing to do with the conception or the miscarriage. I cannot do anything with body, mind and speech. I cannot help anybody do it and I cannot support anybody do it. So that's how you prepare yourself for the death, or you prepare yourself how to live your life. Now you know that you are a Jain. You know that you have a independent soul existence, and that's what Kanji Swami or Gurudev Shri and Acharya Bhagwant has been able to explain with lots and lots and lots of examples. The only Songad's car is running without the gasoline, or the water is boiling in Songad without the heat, because Gurudev Shri say that every, even Param Anu is independent. So in reality the car is not running with the gasoline. If I understand that within myself, then only I will be able to see the world like that. And then only I will be blissful knower. Jai Jinendra. Songad is a place where Pujya Gurudev Shri Kanji Swami resided for almost 45 years, and he propagated the teachings of Jainism from there. This is a place more like Mecca of Jainism, where you can go
and learn about what is the true nature of substance. This has motivated us to celebrate his Janma Jayanti, more not from celebration or festivity perspective, but it serves as a reminder to those important principles. એવા શ્રી કહાન ગુરુદેવનો જય હો જય હો જય હો નાથ તારો જય હો. બીજ ઉગી હોય ને પૂનમ ન થાય એમ ત્રણ કાળમાં બને. શું કીધું? એ બીજ ઉગે છે ને, બીજ પછી પૂનમ તે દીએ પૂનમ તો થાય જ. એ પૂનમ ન થાય એમ કોઈ દી બને? હા 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 હા. એમ જેને આત્માના સમ્યક રૂપી બીજડા જ્યાં ઉગ્યા અંદર ભગવાન ચૈતન્ય મૂર્તિ આનંદનો નાથ અંતરમાં રાગ અને દ્વેષના ભાવથી રહિત થઈ ચૈતન્યનું બીજ ઉગ્યું અંદર. પ્રણમેલી દશા ઉગી, એ બીજ છે. એ બીજ જેમ પૂનમ થઈ છૂટક્યો એમાં સમ્યક દર્શનની પ્રણતિ થઈ કેવળ જ્ઞાન લીધે છૂટક્યો છે. કેવળ જ્ઞાન તેજ મેં જેમ આ બીજ આઈ વોઝ ધેર, એટલે હું એક સાક્ષી તરીકે કહી શકું છું કે એ હોસ્પિટલમાં પણ પોતે પોતાનો સ્વાધ્યાય છોડ્યો નથી, પણ એ જીવનમાં અંતિમ દિવસને અંતિમ મોમેન્ટ સુધી એ પૂરી જાગૃતિમાં હતા. એટલે એવું એક, અને તે ગુજરાતી પ્રમાણે કારતક વદ સાતમ 2037, ઇંગ્લિશ પ્રમાણે 1980 28 નવેમ્બર. પૂજ્ય ગુરુદેવસિંહના પોતાના પાસ્ટના, ભૂતકાળના અને ભવિષ્યના એ ભાવો પ્રત્યે પોતે સ્વયં પ્રવચનમાં કીધું છે, અને એની વિડીયો રેકોર્ડિંગ નાયરોબીમાં છે, એ પણ અવેલેબલ છે. એટલે આ આખું પૂજ્ય બેનસિંહના જાતિસ્મરણને આધારે, અને ક્યારેય પણ કોણે પણ જાતિસ્મરણને એક ખાલી સપના જેવું ન વિચારવું. મહાવીરીમાંથી આવ્યા છે બે ભાઈ, પ્રભુ બિરાજે છે. સર્વજ્ઞદેવ સિમંદર પ્રભુ સમૂહમાં મહાવીરીમાં બિરાજે છે. ત્યાં હતા રાજકુમાર તરીકે. પિતાજી હાથીને ઘોડા અબજોની પેદાશ હતી, મહિનાની અબજોની પેદાશને ઘરે હાથી ઘોડા હતા. એનો હું રાજકુમાર હતો. કુમકુંદાચાર સંવત 49માં ભગવાન પાસે ગયા હતા અહીંથી. ત્યારે હું પણ હાથીને ઉદે ભગવાનના દર્શન કરવા, કુમકુંદાચારના દર્શન કરવા સમોસણમાં ગયેલો. હા હા, આવી વાત છે બાપુ, ઘણી વાતો છે બહુ. અને ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલી વાતો છે, એવી વાતો છે કે આ જીવ, બાકી અહીંથી અમે મરીને સ્વર્ગમાં જવાના છીએ, અહીંથી દેવ થવાના છીએ. બીજા ભાવમાં તીર્થંકરના પુત્ર તરીકેનો અવતાર છે, બીજા ભાવમાં સ્વર્ગ છે.
ચોથા ભાવમાં તીર્થંકર થઈને કેવળ પામીને મોક્ષ જવાનો છું. I'm not distant from India, and I'm not distant from Guru, because 24-hour Guru is within me, giving me that inspiration that, that I myself am Guru, Sahajatma Swarup Param Guru. I myself am my own Guru. And I'm not distant from any place because I live in my own space, and I always have, and always am, and always will be. Born in Umrala, Gujarat, not Kerala. Gurudev Kanji Swami, he loved his mommy, and then she died. Little Gurudev cried. So he moved with his father, maybe to get a bit farther from that place of grief and sorrow. But Gurudev picked himself up. This man would never give up. Always a half-full cup. And he ran a business, a grocery, to provide for himself and family. Soon enough, he was gonna marry. But his dreams were different. He didn't want money, not a single cent. A true Jain, he stuck to the soul. He had a lofty goal. So he took pronunciation. There was a celebration. Now there's meditation. But then a realization. It's just a misdirection. A mistaken diction. This physical focus of fiction. It creates a friction. Not being the soul, a dereliction. Now he's a man on a mission. The religions who focused on physicality, they didn't see the reality. Karma, 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 just a fallacy. His ideas, such originality, such gravity. You see, the true way to bliss is the soul, not food or a kiss. He knew to realize the true inner self, not leave that potential unused on a shelf. So he gave up ditch for the true way. Physical penance just don't pay. Huja Paramatma Chu e Nakki Kar. Huja Paramatma Chu evo Nirnay Kar. Huja Paramatma Chu evo Anubhav Kar. I am the soul. I am the soul. The body is nothing but an empty bowl. The soul is the whole. Now he's on a roll. He shoots, he scores, and it's a goal. After all, this is Kanji Swami. In this game of chess, he's both a Raja and a Rani. He folded words like origami. The best of the best, Jain Hindustani.